Today we are going to discuss another concept which is known as transpose of a matrix. Very simple concept. Transpose of a matrix. Okay. So first of all, transpose matlab kuch nahi, it is a matrix obtained by interchanging the rows and columns of the matrix. That is known as transpose. So examples भी दिया है इधर, आप देखो इधर एक matrix 3 5 root 3 1 0 minus 1 by 5. It's a 3 rows 2 columns. So A transpose, it is denoted using the symbol A ऊपर एक dash A transpose, नहीं तो A ऊपर T A transpose. So देखो first row and column interchange करना. So first row 3 5 becomes the first column. Second row root 3 1, that becomes the second column. Third row 0 minus 1 by 5, that becomes the third column. So a row becomes column. So automatically column becomes row. देखो first column 3 root 3 0, that becomes first row 3 root 3 0. Second row 5 1 minus 1 by 5, so automatically becomes the second row. So you have, what you have to do is just interchange the rows and columns. That will give you the transpose of a matrix. So another example, B is equal to 6 0 minus 5 1 2 3. Okay, we'll write a 3 by 3 method. Okay, so इसका transpose B transpose क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा. So 6 0 1 minus 5. minus 5 Second row 1 2 3, that becomes the second column. So column. automatically क्या होगा, row becomes column also. So इधर आप देखेंगे तो order देखो, this is of order 2 by 3. और ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, एकदम चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जाएगा. 3 rows and 2 columns. Got it? So that is why if A is a matrix of order m by n है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ये हम ji लिखेंगे क्योंकि क्या हो गया, ij becomes ji, isn't it? पोजीशन चेंज हो गया ना, रो बिकम्स कॉलम. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल. एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, n by m. Don't worry about ij and j, this symbolic representation. ij the, so ji हो जाएगा, that मतलब 1 2th element क्या हो जाएगा, 2 1th element हो जाएगा. So that is why इधर ji लिखा. So AJI order becomes either m by n है तो a n by m हो जाएगा. Got it? That is known as transpose of a matrix. So in a very simple way बोलेंगे तो transpose मिलने के लिए you just interchange the rows and columns. That's all. Okay. Now some properties. So these properties you can verify yourself. Like A transpose का transpose ले ला, क्या हो जाएगा, फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा. जैसे इधर B ट्रांसपोज हो गया, आपने B ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. सो क्या हो गया, दिस इज इटसेल्फ क्या हो गया, फिर से B हो गया, इजंट इट? सो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में आ जाएगा. That is one property. Now second property, if you multiply any matrix with a constant and then take the transpose, that will be same as you find the transpose first then multiply with k. Simple example से हम proof करेंगे, एक मिनट. Okay, say for example a is equal to, छोटा सा example 1 2 3 4. So I want to find 2a ट्रांसपोज. सो 2a ट्रांसपोज मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई करना. सो 2 4 6 8 उसका ट्रांसपोज.
सो ट्रांसपोज मतलब रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर देना. 2 4. 1 सेकेंड, मेरा पेन स्टक हो गया. 2 4. First row becomes first column. Second row 6 8. This is 2A transpose. अभी आप A transpose निकालो. Just find A transpose. A transpose. A transpose मतलब first row becomes first column. So 1 2. Second row becomes second column. 3 4. अभी आप 2 into A transpose. A transpose को 2 से मल्टीप्लाई करो. So 1 into 2 2, 3 into 2 6, 2 into 2 4, 4 into 2 8. देखो, both are same. Both are same. Got it? So K into A, uska transpose. That means if you want to multiply a matrix with a constant and then take the transpose, that will be same as you just find the transpose first, then multiply with the K. That is KA transpose. KA transpose is equal to K into A transpose. Got it? Now, then A plus B transpose. Third property, A plus B transpose is same as A transpose plus B transpose. So आपके पास two matrix say A is equal to 6 5 1 0. Another matrix 1 2 minus 1 7. So just find A plus B. A plus B is equal to corresponding elements add कर लेना. 6 plus 1 7, 5 plus 2 7, 1 plus minus 1 0, 0 plus 7 7. So A plus B transpose. First row becomes first column, so 7 7. Second row becomes second column, 0 7. So this is your A plus B transpose. अभी आप A transpose plus B transpose निकाल के देखो. A transpose, first row becomes first column, so 6 5. Second row becomes second column, 1 0 plus. B transpose, first row becomes first column, 1 2. Second row becomes second column, minus 1 7. ऐड करके देखो. 6 plus 1 7, 1 plus minus 1 0, 5 plus 2 7, 0 plus 1 0 plus 7 7. देखो both are same. So A plus B transpose, that is equal to A transpose plus B transpose. That is another property of transpose of a matrix. Now, another important property, this is one of the most important property, A into B transpose. आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया A into B, then उसका ट्रांसपोज, that is not A transpose into B transpose, that is actually B transpose into A transpose. We'll verify. Take any two matrices. Only thing is should be able to multiply that. Okay. That's why इधर बोला है कि A and B are any two matrices of suitable orders. So A is equal to 3 2 1 5. B is equal to -1 3 1 7. 2/2 इसलिए रहेगा कि जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए. सो A इंटू बी. सो A इंटू बी करेंगे तो 3 2 1 5 -1 3 1 7. So you can multiply this because first one is of order 2/2, second one is of order 2/2. First matrix का column, second matrix का row equal है, so you can multiply. The answer will be of 2. Answer will be of 2/2. So first row into first column, 3 into -1, that is -3 plus 2 into 1, so plus 2. First row into second column, 3 into 3, 9 plus 2 into 7, 14. Right? Then first row into first column हो गया, first row into second column हो गया. Now second row into first column, 1 into -1 plus 1 into 5 5. Now second row into second column, 1 into 3 3 plus 5 into 7 35. So आपको मिलेगा
minus 3 plus 2, that is minus 1, 9 plus 14, that is 23, minus 1 plus 5, 4, 35 plus 3, 38. अभी हम देखेंगे व्हाट इज B transpose into A transpose. B transpose B का transpose लिखना. First row becomes first column, minus 1 3. Second row becomes second column, 1 comma 7. Then A transpose, first row becomes first column, 3 2. Second row becomes second column, 1 5. We can multiply, just multiply this. First row into first column, minus 1 into 3, minus 3, plus 1 into 2, 2. First row into second column, minus 1 into 1, 1 plus what? A second. Minus 1 into 1, 1 plus 1 into 5, 5. Then second row into 3 into 3, 9 plus 7 into 2, 14. 3 into 1, 3 plus 7 into 5, 35. So आपको मिलेगा, this is minus 1, 4, 14, 23 and 38. Here हमें जो मिला था, that is AB. So we need AB का transpose. AB का we got only AB there. So AB का transpose is equal to, first row becomes first column, so minus 1, 23. Second row becomes second column, so 438. And you see here, B transpose into A transpose, you got the same thing, minus 123 first column, 438 second column. So that is another important property of transpose of a product. It is not product of the transpose, it is product of the transpose only, but in the order is different. Like A into B ka transpose matlab B transpose into A transpose. Is it clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, So sir. that's a concept of transpose of a matrix. That's all. Transpose of a matrix and their properties. Now some general things I will tell you about the transpose only. Now, just hold on. Okay. So another main thing, symmetric and skew symmetric matrices. Two particular type of matrices. One is symmetric, another one is skew symmetric. Symmetric, another one is skew symmetric. So very simple. If you want to say a square matrix, is a square matrix का case में है. A square matrix is said to be symmetric if its transpose is that matrix itself. से इधर एक एग्जाम्पल देखो, उन्होंने दिया वाला एग्जाम्पल देखो. A is equal to √3 2 3 2 minus 1 by 5 minus 1 3 minus 1 1. So when you find the transpose of that matrix, transpose, first row will become first column. So √3 2 3, first row becomes first column, second row becomes second column, so 2 minus 1 by 5 minus 1. Third row becomes third column, 3 minus 1 1. देखो, both are same ना, A transpose and A are equal. √3 2 3 √3 2 3. 2 minus 1 by 5 minus 1, 2 minus 1 by 5 minus 1, 3 minus 1 1, 3 minus 1 1. So if you want to say a square matrix is symmetric if the transpose is equal to that original matrix. Got it?
why it is defined only for square matrix? Why it is defined only for square matrix? Can you say? Sir, order different. हाँ, नहीं है तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स m by n है तो when you take the transpose it will become n by m, वो कभी इक्वल नहीं होगा. बट स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 by 3, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी ऑर्डर 3 by 3. दैट इज वाई स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा बाकी भी मैट्रिसेस है. 3 by 2 मैट्रिक्स है, 1 by 4 है, 4 by 1 है, जो भी है. बट वो कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होते, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है इफ यू टेक द ट्रांसपोज that should be equal to the original matrix itself, then that type of matrix is known as symmetric matrix. That is example. So symmetric matrix matlab when you take the transpose it should be the same matrix. So कैसे लिखेंगे symmetric matrix? लिखने का एक इसी तरीका है. आप लिखो जैसे 3 2 -7. सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो सेम होना चाहिए ना. सो हम इधर भी लिखेंगे 3 2 -7. डू अंडरस्टैंड? क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज लिखने टाइम सेम आना चाहिए. सो इसलिए हम रो एंड कॉलम सेम ही लिखेंगे. देन ओनली यू विल गेट द ट्रांसपोज. जैसे 2 3 -1. सो सेकंड रो हम लिखेंगे 2 3 -1. सो -7 -1 6. सो -1 सो देखो जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिखा. So you can write many matrices like this. मैंने एक टेक्निक बोला how to write symmetric matrices. So symmetric matrix मतलब इतना ही है. When you take the transpose of that, you will get that original matrix itself. Okay? Clear? So क्या होगा symmetric matrix में? In symmetric matrix, that is important thing. In symmetric matrix, A I J and A J I क्या होगा? इक्वल होगा ना. अंडरस्टूड? क्योंकि जब Yes, sir. जब आपने रो और कॉलम इंटरचेंज करेगा आई जे तो पोजिशन आ जाएगा जे आई तो पोजिशन. जैसे इधर ये वाला 1 3 में था 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो जब वो लिख उसका जो ट्रांसपोज लिखेगा ये वाला इधर आएगा, इधर 3 1 हो जाएगा. सो वो दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक हो जाएगी. जैसे ए आई जे एलिमेंट हमेशा ए जे आई एलिमेंट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. ओके, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल. एंड आप अपना मन के हिसाब से कितना भी बहुत सारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं. टेक्निक तो मैंने बताया. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो स्क्यू सिमेट्रिक बोलना है तो सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा? A transpose, when you take the transpose, you will get the negative of the original matrix. So इधर आप देखो, इधर B 0 E7. So when you take the transpose of that B transpose, so 0 E7, oh first row becomes first column 0 E7. Second row minus E 0 G. Second row becomes second column. Third row minus F minus G 0. अभी आप देखो this is nothing but if you take a negative common, this is 0 E F minus E 0 G minus F minus G 0 if you take a negative common, or in other words it is negative of the original matrix. अदरवाइज डायरेक्टली आप इधर से बोल सकते हैं ये बी एंड बी ट्रांसफर देखेंगे तो इधर 0 ई एफ था, इधर 0 माइनस ई माइनस, हर एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया. इधर माइनस ई था, इधर प्लस ई हो गया. 0 जी, इधर जी था माइनस जी हो गया. इधर माइनस एफ माइनस जी था, इधर एफ जी हो गया. देन 0. सो क्या हो गया? बी ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. गॉट इट? सो इफ यू टेक द सो इसके अलावा भी मैट्रिसेस हमेशा ऐसे नहीं हर स्क्वायर मैट्रिक्स आइदर सिमेट्रिक होगा नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा करके नहीं.
आप जब ट्रांसपोज निकालते हैं, when you find the transpose, if you are getting the original matrix itself, that is known as, then that original matrix is known as a symmetric matrix. When you find the transpose, if you get negative of the original matrix, then that type of matrix is known as skew symmetric matrices. There are matrices which are neither symmetric nor skew symmetric. Okay. Now, so इधर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको एक टेक्निक बताया कैसे लिखना है, देन उसका एक प्रॉपर्टी बताया, आई जे एलिमेंट एंड जे आई एलिमेंट शुड बी इक्वल. सो वैसे इधर स्क्यू सिमेट्रिक में आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ijth element, when you find the ijth element and jith element क्या होगा? एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, isn't it? Negative. तभी आप जब ट्रांसपोज निकालेगा आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स Yes, sir. नेगेटिव आएगा. सो वन थिंग, अब देखो इधर ई द, इधर तो सो वो इधर देखो, इधर इधर ही देखो, इधर ई वन टू एलिमेंट ई माइनस वन टू एलिमेंट इज टू वन एलिमेंट इज माइनस ई, इधर एफ, इधर माइनस एफ, इधर जी, इधर माइनस जी. सो आई जेथ एलिमेंट जे आईथ एलिमेंट सेम ही होगा, बट ओनली थिंग इज इन स्क्यू सिमेट्रिक देयर साइन आर ऑपोजिट, वन प्लस है तो अदर वन नेगेटिव होना चाहिए. ओके. नाउ इसके अलावा, इसके अलावा अब मेन डायगोनल देखो, मेन डायगोनल, डायगोनल में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि उसका कारण यही है, ये आई आई as per this rule, aii ij and ji will be same, only thing is it will be minus. So aii will be minus of aii, that means 2aii is equal to 0. That means aii should be 0, isn't it? You got it? ijth element jith element दोनों सेम होगा, बट एक दूसरे का नेगेटिव होगा. सो ए आई आई एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे तो फिर से आई आई आएगा, बट एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए. ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएंगे तो 2ai is equal to 0. So 2 is not 0. That means ai element. That means ai element. That means a11, a22, a33. That elements क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. नहीं तो आपको पता है जैसे माइनस ई माइनस एफ एफ माइनस जी जी. सो बट जब आप ट्रांसपोज निकालते टाइम ये तो एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा ना, ये वन वन तो वन वन पोजिशन में आएगा, टू 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 भी टू टू तो पोजिशन में आएगा, थ्री थ्री विल बी थ्री थ्री तो पोजिशन में आएगा, इवन इफ यू टेक द ट्रांसपोज. सो एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो जीरो का नेगेटिव जीरो ही है, दैट मतलब वो जीरो ही होना चाहिए. एक नंबर का नेगेटिव और नंबर both are same only when the number is 0. That is why in skew symmetry matrix always the diagonal elements of a skew symmetry matrices are always 0. Got it? And if you want to write Yes, sir. matrix, skew symmetry matrix, diagonal element तो 0 है, so first element तो 0. अब अभी 0 2 minus 3 लिखा, so इधर क्या लिखना, उसका नेगेटिव 2 का ऑपोजिट -2, -3 का 3. अगेन इधर 0 ही आएगा, -2 0 1, so इधर आप देन -1 लिखना and 0. So this is a skew symmetric matrix. वैसे आप हम जितना भी skew symmetric matrix आप खुद लिख सकते हैं. Got it? So that is the concept of symmetric matrix and skew symmetric matrices. Clear? There are some important properties. For any square matrix A with a real number entries, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मतलब इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नहीं तो फंक्शंस, व्हाटएवर इट इज, ओनली थिंग इज रेक्टेंगुलर अरेंज, रो एंड कॉलम होना चाहिए था.
Okay. अभी for any square matrix A, entry should be means entries मतलब members should be real numbers होना चाहिए. Then first one A plus A transpose. That means if you add a matrix and its transpose is a symmetric matrix. And second result A minus, if you find the difference between A and A transpose. So for every matrix there is transpose, square matrix hai to bhi. For every matrix there is transpose. If you add one matrix with this transpose, you will always get a symmetric matrix. When you subtract that, you will always get a skew symmetric matrix. Okay. So we'll see. Just before proving it, take any example. A. Okay. 1 minus 3 2 7 randomly मैंने लिखा. Okay. A transpose. A transpose मतलब उसका transpose लिखो 1 minus 3. First row becomes first column. 2 7. Second row becomes second column. अब देखो A plus A transpose क्या होते हैं? Transpose 1 plus 1 2 minus 3 plus 2 that is minus 1 2 plus minus 3 that is minus 1 7 plus 7 14. ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक है क्या? देखो ये प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखो 2 minus 1 first row becomes first column minus 1 14 second row becomes second column. You see that both are same na 2 minus 1 2 minus 1 minus 1 14 minus 1 14. So A plus A transpose हमेशा क्या होगा? Symmetric होगा. Clear? That is what this theorem says. A plus A transpose is always a symmetric matrix. अभी आप A minus A transpose देखो क्या होते हैं. A minus A transpose. A and A transpose कम कर दो. 1 minus 1 0 minus 3 minus 2 minus 5 2 minus minus 3 2 plus 3 5 7 minus 7 0. देखो अभी A minus A transpose का ट्रांसपोज निकालो. First row becomes first column 0 minus 5. Second row becomes second column 5 0. If you take the negative common, it is 0 minus 5 5 0. That is negative 0 minus 5 5 0 is nothing but A minus A transpose. देखो when you find the transpose of A minus A transpose, what you got is negative of that. So क्या हो गया? This is comma which is skew symmetric. Understood? Did you understand? So when you find A plus A transpose is always symmetric. A minus A transpose is always skew symmetric. Clear? But ये symmetric था क्या? ये symmetric भी नहीं था, skew symmetric भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. So but when you take the transpose A transpose, then if you add that A and A transpose, A plus A transpose is always symmetric. A minus A transpose is always skew symmetric. Clear? And I want to tell you one important concept from here again. ये plus A transpose का half. Okay. ये minus A transpose का half. ये दोनों ऐड कर लो. So देखो इसका स्पेशलिटी क्या है? A plus A transpose ऑलरेडी सिमेट्रिक है. So half of A plus A transpose क्या होगा? सिमेट्रिक होगा ना.
एंड हाफ ऑफ, क्योंकि आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सिमेट्री का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहे ना, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, करेक्ट। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, इधर आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज मिला था, इधर इधर ऊपर, सो उसका हाफ, सो 2 का हाफ 1, -1 का हाफ -1/2, अगेन -1 का हाफ -1/2, 14 का हाफ 7, प्लस ए माइनस ए ट्रांस, देखो ये सिमेट्री की है, कोई सिमेट्री का प्रॉपर्टी चेंज, 1 -1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी 1 -1/2, सेकंड रो -1/2 7, सेकंड कॉलम ऑल्सो -1/2 7, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलरेडी सिमेट्रिक है, उसको एक नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई किया करके उसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होते, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको इधर मिला था, उसका हाफ, 0 का हाफ 0, -5 का हाफ -5/2, 5 का हाफ 5/2, 0 का हाफ 0, करेक्ट। एंड सो ये ऐड करो, 1 + 0 1, -1/2 plus -5/2, that is -6/2, that is -3, -1/2 plus 5/2, that is 4/2, which is 2, 7 plus 0, अरे इधर 7/2 था ना, एक मिनट है, हाँ 7 plus 0 is 7, ऐड करेंगे तो, आर यू लिसनिंग? यस सर। तो आपको क्या मिला, ये देखो 1 - 3 2 7, 1 - 3 2 7, क्या था वो, that itself is your ये, isn't it? इसमें से आपको क्या समझ में आ गया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, for any square matrix, that can be expressed as the sum of two matrices in such a way that one is symmetric, another one is skew symmetric, isn't it? Clear? Did you understand that idea? So it's one of the very important idea. Every square matrix, so एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 - 3 2 7, देखो उसको हमने दो मैट्रिक्स का सम का रूप से लिखा, तो उसका स्पेशलिटी कैसे, उसमें से एक सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। So every square matrix can be expressed as the sum of two matrices in which one is symmetric and another one is skew symmetric. बट हम मन से लिखने से अच्छा उसको लिखने का टेक्निक है ये, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दैट इज नथिंग बट ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। ओके, आप इधर भी ऐसे थियोरेटिकली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, सो प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, बाकी हाफ ए प्लस हाफ ए आपको हो जाएगा, इट विल बी ये, ठीक है। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये सब का प्रूफ जनरली, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया, इसका ये दोनों रिजल्ट का प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सरसाइज भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इसमें से आपको इतना ज़्यादा आइडिया मिल गया, if a square matrix A is there, then if you find A transpose, if you add those A and A transpose, you will get a symmetric matrix. If you subtract A and A transpose, you will get a skew symmetric matrix. And also here through an example I have told you here, I have shown you here, every square matrix can be expressed as a sum of two matrices in which one is symmetric, another one is skew symmetric. वैसे लिखने का टेक्निक है, symmetric matrix is nothing but half of A plus A transpose, skew symmetric matrix is half of A minus A transpose. Clear?